Hello friends, welcome back to the channel our new source, and today we are going to start the photosynthesis part 5, and in this chapter we are going to learn about the dark reaction or biosynthesis phase. Here you will learn about the C3 cycle, C4 cycle and CAM pathway, and if possible then we will cover the rest other thing. Okay, let us start. First we have to learn about what is the important points relating to the dark reaction according to our exam point of view. Dark reaction is otherwise known as biosynthetic phase. Then the reaction is occurring during the daytime as well as during the night time, and it is a light independent process. What is it? It is light independent process. So that it's named as dark reaction. But light reaction is a light dependent process, and all the reaction occurring during dark reaction are enzyme control and temperature dependent. So they are enzymatically controlled, or they are enzyme controlled and temperature dependent. The enzyme control means these are catalyzed by some biocatalyst known as enzyme. Okay, then so though they are controlled by enzymes, they are called as biochemical phase. And who discovered this process? Most importantly, remember the name of the scientist. The scientist name was Blackman, and according to this, the dark reaction is also known as Blackman reaction. Why? Because first time the Blackman discovered or reported this phenomenon. And where does it occurs? If I'll see the site of occurrence, the dark reaction it is occurring in stroma of chloroplast. Then if and what does not it need? It does not need any pigment system. No need of pigment system as well as or electron transport chain, but it requires what? It needs the assimilatory power. What are the assimilatory powers? The assimilatory powers are the reducing powers. They are the reducing powers which are produced from the light phase of photosynthesis reaction or light reaction, and these are nothing but these are ATP and NADPH, or you can say it as NADPH too. Then what are the end products of this dark reaction? The end product of dark reaction is carbohydrate. As you know that the end product of light reaction is this ATP and NADPH, as well as oxygen is releasing during non-cyclic photophosphorylation, and during cyclic photophosphorylation only ATP production is occurring. Then how does this carbohydrate is producing? Now this carbohydrate is producing by the
enzymic reduction of carbon dioxide. Then by using assimilatory power known as ATP and NADPH2. So that's all about the some introductory as well as remembering parts. Then we have to see about what are the types of photosynthetic pathway, means types of dark reaction pathway, or you can say diversity in photosynthetic pathway. You will see, if you want to see about the diversity in photosynthetic pathway, then you can see that there are three types of photosynthetic pathway, diversity in photosynthetic pathway. Actually डार्क रिएक्शन में कौन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होइकि ना कार्बोहाइड्रेट बने जोटा कि बायोकेमिकल पाथवे भी कहा जाए जाको आ एटा तीनटा वे रे होइथाय तीनटा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन जोगु बा डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट ऑफ प्लांट जोगु कोन कोन गोटेला C3 नंबर 1 नंबर 2 C4 नंबर 3 calm pathway. Then C3 pathway is otherwise known as Kelvin pathway. It is otherwise known as or Kelvin cycle, and it occurs in C3 plants. This is very important. For example, your rice. Then C4 pathway, it is otherwise known as Hatch-Slack pathway or HS pathway, and it is occurring in C4 plant. Common example, maize, sugarcane. Then calm pathway, it is known as if you want to write it in full name, it is known as crassulacean acid metabolism. In calm plant, and occurs in where in crassulacean plants, or normally you can say calm plants, and they are generally the plants which are belonging to Crassulaceae family, the cactus like plant. Okay, acha. Then we have to learn in details regarding to the C3 plant or C3 pathway. And this is the most common. C3 pathway is most common pathway. Most of the plant prefer this, but C4 plant are generally available in temperate region, and the plant which show the Kranz anatomy, there you can also get such kind of C4 pathway. अच्छा C3 pathway रे कौन highlight pointed से विषय चलो एबे देखिबा हैला कि. So this is the major process of dark reaction, mean most common process. What is it? C3 pathway is most common process and occurs in where most of the plants like monocots, dicots, most of the monocots, dicots and some algae एमान केस मध्य देखा देता है यही कौन C3 plant. Then next it is what? It is the enzyme control biochemical reaction occurs in stroma of the plant. As you know that not in the plant, stroma of the chloroplast. Then माने कि गोटे एंजाइम कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शन ये सब तक ही एंजाइम कंट्रोल तीनटा को तीनटा का डे टाइम रे ही एटा होता है, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइट टाइम, sorry, light. That means you know very well it is light independent process. If you can, then you can write some additional point like what?
Now it occurs in stroma, occurs in daytime, but light independent process. The light reaction is light dependent, but it is the direct reaction C3 pathway or Kelvin cycle, it is light independent process. Acha. Then this pathway was discovered by whom? It was discovered by first, let me write the scientist name. It was discovered by Melvin Kelvin, or you simply say it as M. Kelvin. This must be the first point. And how Melvin Kelvin discovered this process? No, he discovered this process by taking the isotope of carbon, and he took the carbon heavy isotope of carbon 14. Then he traced the path for carbon to determine where it is going from carbon dioxide to the reactant side of the photosynthesis towards the product side of the photosynthesis. That means माने कि carbon 14 high isotope heavy isotope को से यूज करके ना देखिथिले जे कार्बन डाइऑक्साइड थिबा कार्बन टा को पाथ देई किना जाय कि से अपन माने पढिथियो जे फेट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस तो सेही प्रोसेस रे से देखिथिले जे कार्बन आइसोटोप कार्बन हेवी आइसोटोप नेले जना पड़तला जे पाथ को तार ट्रेस करि पातले जे रियली कार्बन डाइऑक्साइड थिबा कार्बन टा जाई कोठी यूटिलाइजेशन होछि तो से कार्बन 14 नेथिले आज हेवी आइसोटोप for why na to trace the path, to trace its path कि केमिति एटा कार्बन डाइऑक्साइड डिटाच हेकिनि जाई कार्बोहाइड्रेट रे मिसुची हैला कि एंड एते पई से नोबेल प्राइज बंद पाइथिले केबे ना 1961 रे ही गॉट द नोबेल प्राइज ठीक अछि आ सेही दिनठू C3 पाथवे को कहला केल्विन साइकिल अच्छा आकु C3 कहीं कहउची आ पत्र मध्ये स्टोरी अछि स्टोरी नहीं तो रियलिटी अच्छी कौन ना ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन बा हमर जोटा गोटे थर्मल लेवल यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस एटा होची तो एथिरे फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनुथिला कौन ना इन C3 plant the fast stable product was now it is also occurring but initially it was identified as a 3 carbon component or a 3 carbon compound which is phosphoglyceric acid. What is that? PGA. PGA stands for phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid. Then next ଆସିଲା ଆଉ ଏଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ନା ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁ ଫଲୋଜ C3 pathway they are known as C3 plants and ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ C3 plants are most of the dicots most of the monocots and algae ଠିକ ଅଛି and if you remember the example of C4 plant then you will not be confused with what are the examples so examples are very most important what are the examples except all the C4 plants you need to remember these all things okay आ C4 प्लांट जेहेतु बहुत कम प्लांट रुए तो से सब एग्जांपल मन रखिले अल्टीमेटली त माने एडा मन रखि परिबे आपण माने एटा मन रखि परिबे आमे C4 प्लांट विषय जानला बेले से समय रे मु कहबी जे कोन कोन सब आर एग्जांपल गुडा C4 प्लांट रो ठीक अछि then what another points you have to remember केल्विन साइकिल रे बा C3 साइकिल रे कोन कोन सब प्रोसेस हुए ठीक है ओवरऑल आपण जानिबे तबरे इन डिटेल्स नहीं डायरेक्ट आपण डिटेल्स जानिबे बेटर हैला कि अच्छा if you come to the steps then what are the steps occurring in C3 plant let us see it actually here the first acceptor
प्राइमरी एक्सेप्टर ये कौन नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड रो रिडक्शन होइकिना फोटोसिंथेसिस बने तो एटमॉस्फेयर रू स्टोमाटा देकिना जेतलो कार्बन डाइऑक्साइड आसे तो से कार्बन डाइऑक्साइड को फास्ट रिसीव करे किए ना फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होची गोटे 5 कार्बन वाला कंपाउंड इनिशियली देखंतु हमर कोन होतिना जदि C3 प्लांट विषय में देखिबा जे ग्लूकोज हो गोटे C3 प्लांट काम कौन होता ना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करी कौन बनाऊला ना ग्लूकोज बनूला C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड है गोटे सिंगल कार्बन ग्लूकोज हो गोटे 6 कार्बन वाला सब्सटेंस तो एठी हमर कौन होता ना इनिशियली 6टा कार्बन बनू नथिला इनिशियली 6टा कार्बन बनू नथिला आ से समय रे माने एमती इनिशियली कौन बनूला ना 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनूला फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनूला गोटे 3 कार्बन वाला सब्सटेंस तो 3 कार्बन वाला सब्सटेंस कौन थिला PGA तो इनिशियल आ से 3 कार्बन वाला सब्सटेंस पर ग्लूकोज को कन्वर्ट होता सो फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाज कन्वर्टिंग इनटू ए 3 कार्बन कंपाउंड नेम्ड एज PGA तो साइंटिस्ट माने से तळे खोजिले जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड गोटे कार्बन ऑलरेडी अच्छी आउ फास्ट स्टेप रे माने केल्विन साइकिल C3 प्लांट जो फास्ट स्टेप गोटे 3 कार्बन वाला कंपाउंड बाहर तो ऑब्वियसली आ गोटे 2 कार्बन वाला कंपाउंड रो दरकार होची तो से 2 कार्बन वाला कंपाउंडटा कौन ताको बहुत रिसर्च कले जे कौन से 2 कार्बन वाला कंपाउंड बहुत रिसर्च कला परे देखले कि नहीं रियली कौन से 2 कार्बन वाला कंपाउंड रो यूटिलाइजेशन होनी इंस्टेड ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड गोटे 5 कार्बन वाला कंपाउंड रो सेठी यूटिलाइजेशन होची आ से 5 कार्बन वाला कंपाउंड थिला RuBP और यू कैन से RuDP that means ribulose biphosphate और यू कैन से ribulose diphosphate ठीक अछि तो सेही 5 कार्बन वाला कंपाउंड प्लस गोटे कार्बन है कि ना 3 कार्बन वाला कंपाउंड दीटा बनि जाउथिला ठीक अछि तो कार्बन कंटेंट दीपट साइड रे बैलेंस रहउथिला ना कि गोटे 2 कार्बन वाला कंपाउंड दरकार होउथिला 5 carbon plus 1 carbon present in carbon dioxide they both are contributing 6 carbon at the reactant side and in product side you can see 2 molecule of 3 carbon compound are releasing so ultimately they will give you 6 carbon compound so in this way you can see that there is a balancing between reactant side as well as the product side in case of the C3 pathway चलो एबे नेक्स्ट देखिबा कोन ना से फास्ट कार्बन एक्सेप्टर जोटा थिला से गोटे 3 कार्बन वाला कंपाउंड 2 कार्बन वाला कंपाउंड है कि ना कोन थिला गोटे 5 कार्बन कंपाउंड थिला and that 5 carbon compound is known as RuBP what is that RuBP or in some book you can see the name as RuDP so RuBP stands for what it stands for ribulose bisphosphate or biphosphate and in case of RuDP this will stands for di so bi or di that means 2 so ribulose is a carbohydrate 5 carbon carbohydrate and keto sugar then एथरे कोन थिबो ना दीटा फॉस्फेट लागे कि ना थिबो आ जे के कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करिबारे बा रिसीव करिबारे एज ए प्राइमरी एक्सेप्टर हिसाब रे काम करथिबो एटमॉस्फेयर रु एंड एक्सेप्ट कला परे कोन होथिबो ना फर्स्ट स्टेप होथिबो जोटा के हम कोन कहबा ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन the first step is carbon dioxide fixation or you can say carboxylation what is it is the carboxylation process this is the first step आपण मानु कहितले C3 साइकिल तीनटा थिबो गोटेला C फॉर कार्बोक्सिलेशन आर रागिबे माने C रे कांदिबे आर रे रिउड हेबे कार्बोक्सिलेशन देन रिडक्शन एंड फाइनल वन इज रीजनरेशन माने पुन निज मन को बुझेबे मन पड़ से स्टोरी जो जदि मन पने ताले प्रीवियस वीडियो आपण माने देखंतु जानि परिबे अच्छा फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन थिला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट कंपाउंड C3 साइकिल कौन थिला ना PGA व्हिच इज ए 3 कार्बन कंपाउंड तो सेति पई आना थिला C3 साइकिल ठीक अछि PGA stands for phosphoglyceric acid in some book it is written as it was written as phosphoglycerate also glycerate और glyceric acid अपन देखिबे जदी दे बोथ आर सेम glycerate हला ionic state रे ATE लगे आज suffix but normally glyceric acid हिसाब रे लिखथबो अच्छा देन आउ कोन हुए
na ATP and NADP is used as the assimilatory power, which are also the product of light reaction. And एगुड़ा यूज हेले कौन हुए ना phosphoglyceric acid टा why they are used? They are used to convert what? Now phosphoglyceric acid into another 3 carbon compound known as glyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde. आपने मन रखु जे कौन सी ऑर्गेनिक एसिड को कौन से भी ऑर्गेनिक एसिड को जदि आमे एटीपी सहित ट्रीट करेबा एटीपी ट्रीट करेले एटीपी सहित बा एटीपी रो यूटिलाइजेशन हेले कौन बनिबो ना एडीपी प्लस फॉस्फेट बनिबो देन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनिबो से समय कौन हुए और एनएडीपीएच देकिना आमे जदि रिड्यूस करेबा एनएडीपीएच देले कौन होबो तार रिडक्शन होबो एनएडीपीएच ऑलरेडी हाइड्रोजन थी तो ये हाइड्रोजन देदेला पर रिडक्शन हो कहार ना ऑर्गेनिक एसिड रो रिडक्शन हो गला पर कौन बनिबो ना एनएडीपी प्लस कौन बने ना नॉर्मली बने एनएडीपी प्लस प्लस एच प्लस देन एठी कौन हाइड्रोजन देदेला पर कौन बनिबो एच प्लस टा चली जीवो ऑक्सालो सॉरी ऑर्गेनिक एसिड पाखकू ऑर्गेनिक एसिड पाखकू बोले तार रिडक्शन हो जीवो आ एटीपी रो यूटिलाइजेशन मध्ये होए एटीपी रो यूटिलाइजेशन हेला फाइनली हमकू किछ गोटे एल्डिहाइड मिले हैला कि जोटा कि आम एठी पाइले कौन ना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड is can converted into one aldehyde known as phosphoglyceraldehyde PGAL by the utilization of ATP and NADPase जोटा कि आमर रिलीज होतला कोथिरे फोटोसिंथेसिस रो लाइट फेज ऑफ रिएक्शन रे एंड एटा होची सेकंड स्टेप जोटा कि रिडक्शन होची फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रो रिडक्शन है कि ना फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनची आ फर्स्ट स्टेप कोन थिला ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड सेकंड स्टेप आसी गेला रिडक्शन ठीक अछि अच्छा then कौन होगा ना फर्स्ट hexose then what will happen na phosphoglyceraldehyde then it will convert into some other compound then what will happen the isomerization of some molecule of 3 carbonated phosphoglyceraldehyde occur into 3 carbon of DHAP that means some isomerization step will happen due to that isomerization step हवा isomerization step हेले कौन हवा ना ये जो 3 कार्बन वाला phosphoglyceraldehyde बनी थिला PGL stands for phosphoglyceraldehyde लिखि दउछि आपन मन पय phosphoglyceraldehyde ये phosphoglyceraldehyde टा कन्वर्ट जाय कोथुर को ना ड्यू टू आइसोमराइजेशन हैला परे it converts into one triose phosphate that triose phosphate is known as it is also 3 carbon phosphate DHAP DHAP stands for dihydroxy acetone phosphate then from this what happen initially look at here फर्स्ट कौन होना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हैला परे 3 कार्बन कंपाउंड बनबो सेटा दीटा बनिथिबो हैला कि अच्छा छाड़ा से सब पर देखिबा धीरे धीरे कौन हबो ना गोटे फर्स्ट हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट बनिबो हेक्सोज माने 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनिबो हेक्सोज 6 carbon वाला hexose forms or what is that forms what is that now it is your fructose what is it and normally fructose was remaining attached with phosphate and what are these actually 2 phosphate was attaching with that and सेतिपाई से फ्रुक्टोज को आमे कोन कहबा ना इट इज फ्रुक्टोज 1,6 biphosphate or you can say diphosphate bi or di you can use alternatively okay then what will happen
this can be converted into what? It can be converted into directly fructose, or it can convert into glucose, or it can convert into sucrose, and if you will undergo for storage purpose, it can convert into starch. Okay, acha. Then next what will happen? In throughout this process, how much carbon dioxide molecule was requiring? 6 carbon dioxide molecule will be required. So the cycle will occur 6 times. Okay, and in the next step, if you will see in what C3 cycle, what you will observe that they will need how much amount of ATP? They will need 12 ATP and 12 NADPH for the what? Completion of all reaction. So here you can see, if you will see, 6 carbon dioxide will require how much? 12 ATP as well as 12 NADPH, or you can say NADPH2 for Kelvin cycle, to produce 1 molecule of glucose or 1 molecule of hexose. And from ATP, what you will get? You will get 12 ADP, and from NADPH2 after reduction, you will get 12 NADP plus. ओके, तो ओवरऑल जदि आम रिएक्शन को देखा ताले कौन कौन आम पाइबा? जदि आम ओवरऑल रिएक्शन गोटे साइक्लिक प्रोसेस रे देखा जे केमिति सुक्रोज बनुची एक्सेप्टिंग द रीजनरेशन अप टू माने आम दुईटा प्रोसेस देखिले ना. फर्स्ट देखिले कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जोटा कि आम कौन कहूचे कार्बोक्सिलेशन. देन आम कौन देखिले ना फास्ट आमर आसला कौन कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन है. देन थिला आमर RUBP और RUDP, एंड से बनला गोटे 3 कार्बन वाला, गोटे नहीं तो दुईटा बनला, कारण यहाँ थिला 5 कार्बन वाला कंपाउंड आ यहाँ 3 कार्बन वाला दुईटा कौन बनला ना आपनकर बनला PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. आ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रो रिडक्शन होइकिना आपन पाखर कौन बनला? रिडक्शन हैला माने सेठी कौन लागिवो? NADP लागिवो, NADPH लागिकिना NADP प्लस बनला. तो जेहेतु गोटे PGA पई गोटे NADP लागुची, तो दुईटा PGA पई 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 लागिवो फॉर 1 कार्बन. देन ATP कौन बनिवो? ATP मध्य दुईटा लागिवो, दुईटा PGA पई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पई दुईटा ATP लागिवो, आ सेथरु दुईटा बनिवो कौन ना दुईटा बनिवो ADP प्लस दुईटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनिवो. आ बनिवो सेथरु कौन ना बनिवो गोटे आल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड रु आइसोटोप होइकिना कौन बनिवो ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. सी भी दुईटा बनिवो, ये भी दुईटा बनिवो, एंड ये भाव कौन हम ना ये प्रोसेस आम फॉर्मेशन है. एंड ये प्रोसेस को आम कौन कहे ये पाथवे को आम कहे रिडक्शन स्टेप. एंड ये जो स्टेप होची आम कहे कौन ना आइसोमेराइजेशन, जोटा कि टिके आइसोमेराइजेशन नॉर्मली खाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम रहो, तो से आपको बेसी इंपोर्टेंस दियंतिनी. बस दुईटा स्टेप मन रखु, गोटे है कार्बोक्सिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, नेक्स्ट वन इज रिडक्शन है कि. आउ ए रिडक्शन है कौन हुए ना आपनकर PGAL रु रिडक्शन है PGL रु डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वगैरह बने. अच्छा, नॉर्मली कौन हुए ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन रु डायरेक्ट बनवा कौन ना डायरेक्ट आपन बनवा फ्रुक्टोज. एटा तो दुईटा 3 कार्बन वाला सब्सटेंस थी ना, दीज ऑल आर व्हाट 3 कार्बन वाला कंपाउंड.
एम सब 3 कार्बन वाला कंपाउंड थे। तो से कौन हम ना धीरे धीरे ना एथिरू फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड रु नॉर्मली गोटे ट्रायोज फॉस्फेट बनी थाए। कौन बने गोटे ट्रायोज फॉस्फेट बने। आउ कौन हुए ना से ट्रायोज फॉस्फेट रु फर्दर जाकिना एठी कौन हम ना फ्रुक्टोज आपनकर बनिबो। फ्रुक्टोज 1,6 डीपी और बीपी बाइफॉस्फेट बने। ठीक है लगी। देन एतिर जदि हवा आइदर सुक्रोज बनिबो नहले ग्लूकोज देन स्टार्च बने। फाइनली एतिर कौन बने ना फ्रुक्टोज एतिर अल्टीमेटली बनिबो कौन ना एतिर अल्टीमेटली बनिबो फ्रुक्टोज। देन फ्रुक्टोज दीटा सब्सटेंस कन्वर्ट हो फ्रुक्टोज धीरे धीरे फॉस्फेट गोटे गोटे हटेबो। गोटे गोटे फॉस्फेट रिलीज कला पर फास्ट कन्वर्ट हम फ्रुक्टोज मोनोफॉस्फेट देन नॉर्मली फ्रुक्टोज को कन्वर्ट हम एंड फ्रुक्टोज को कन्वर्ट होला परे से फ्रुक्टोजटा आइदर डायरेक्टली पळे जीवो स्टोरेज पाई स्टार्च फॉर्मेशन रे गोटे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड सॉरी गोटे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हे जीवो व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन मोनोसैकेराइड यूनिट मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज और से फ्रुक्टोजटा कन्वर्ट जीवो कोथुर को ना either it will convert into glucose and that glucose may will convert into sucrose for use or that fructose may directly convert into sucrose। fructose रो डायरेक्ट ग्लूकोज कि पुणी फर्दर सुक्रोज हो पारथिबो नहले फ्रुक्टोज रो डायरेक्ट सुक्रोज मध्ये हे पारथिबो फॉर यूज पई हे जो सुक्रोज एंड स्टार्च कोन पई फॉर्मेशन हुए ना फॉर स्टोरेज। रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा एटा थिला हमर नॉर्मल प्रोसीजर हैला कि एंड आ पर फेज जोटा हबो पुणी ट्राइज फॉस्फेट रु केमते बने पुणी आरईबीपी नेक्स्ट फेज पई साइक्लिक प्रोसेस को कंप्लीट करा पई ताको कहबा हमें रीजेनरेशन। तो से रीजेनरेशन टा कोन से रीजेनरेशन को पढिबा। रीजेनरेशन को बुझो केले हमके एठी कोन हुए ना नॉर्मली एठी आहुरी 6 टा कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट हबो। धीरे धीरे इटे कौन हुए ना गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज गोटे कार्बन डाइऑक्साइड आसला परे एटू कौन हुए ना 6टा कार्बन डाइऑक्साइड आसला परे फाइनली एठी देखिए आम नेक्स्ट रीजेनरेशन स्टेप टा को फास्ट टा को बुझंतु स्टेप्स कौन देन वी विल गो फॉर दैट। normally what is happening for regeneration step, this is the most important step, that for regeneration is the third stage for C3 cycle। regeneration step रे कौन हुए ना 6 molecule of 5 carbon REBP is required। why ना to fix 6 molecule of carbon dioxide which contain only 1 molecule। कौन पाई दरकार ना for fixation or you can say carboxylation। then REBP generally कौन हुए ना जनरेट होता है कोथरू ना from the triose phosphate which is the 3 carbon phosphate and that triose phosphate may be REBP कोथरू जनरेट होता है ना some triose phosphate which is a 3 carbon phosphate 3 carbon वाला ट्रायोस फॉस्फेट रू रिलीज होता है। अच्छा ट्रायोस फॉस्फेट गुड़ा किए ना ट्रायोस फॉस्फेट में भी फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड होइथिबो जोटा कि रिडक्शन एकना बनथिबो और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP मध्य होइथिबो एज वेल एज आउ कोन ना फ्रुक्टोज रू मध्य होइथा है माने ए दुटा मिसी किना ट्रायोस फॉस्फेट गोटे 3 कार्बन वाला फॉस्फेट आउ ता सह 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज भी दरकार हैला। एंड फ्रुक्टोज टा कोन ना फ्रुक्टोज इज एन इंटरमीडिएट फॉर द केल्विन साइकिल। आ ए समय रे मध्य कोन हुए ना रीजेनरेशन रे 1 ATP मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड हैला कि ए समय रे कोन हुए गोटे ATP मॉलिक्यूल रो इन्वेस्ट मध्य होइथा है। तो जितला में ओवरऑल प्रोसेस देखिबा फॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड गोटे कार्बन डाइऑक्साइड पे गोटे ATP 6टा कार्बन डाइऑक्साइड में 6 थर साइकिल होबा तो टोटल 6
ATP will be required for what? For regeneration. ठीक अच्छे रिजेनेरेशन में 6टा ATP आउ थे यूटिलाइजेशन हम देन फास्ट देखो रिडक्शन प्रोसेस रे यूटिलाइजेशन है फर्दर एटी पुणी रिजेनेरेशन ATP यूटिलाइजेशन होची ATP यूटिलाइजेशन है ये कौन बन ना एठू पुणी बन 6टा 5 कार्बन वाला कौन RUBP गट इट जदि आम देखा स्टेप्स सब जे रिजेनेरेशन स्टेप्स सब कौन ना नॉर्मल तो आपन जानते जे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इनिशियली कन्वर्ट हो कौतर को ना तार आइसोमर को कौन से आइसोमर ना तार आइसोमर थिला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट and they both are 3 carbon compound. Then the phosphoglyceraldehyde may convert into indirectly into fructose or direct dihydroxyacetone may will convert into fructose 1,6 bis phosphate or biphosphate. Then it is a 6 carbon compound. Then it will convert into fructose monophosphate I will write like this phosphate and it is also a 6 carbon compound and एथि कौन हम ना गोटे फॉस्फेट बाहर जीवा दीटा फॉस्फेट थिला गोटे फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर कर दिया PO4 minus. Then what will happen that fructose may will go for different steps to produce what? To produce ribulose, which is a 5 carbon carbohydrate, ribulose monophosphate, and it is a 5 carbon compound, or that dihydroxyacetone 3 carbon compound, it may will convert into ribulose monophosphate and that it is a 3 carbon compound, so 2 carbon compound will be so 2 molecule of dihydroxyacetone will be required because दीदीटा सब बन बनी आसथिबो ना ये सब दीदीटा बन बनी आसथिबो दीदीटा बन बनी आसला परे फाइनली जेतले एमाने आसिकिना कोन करिवे ना 6टा कार्बन एठी थिबो राइबुलोज बनि जाउथिबो बन गेला परे जोटा कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड एंड ए समय कोन होथिबो ना एटीपी रो यूटिलाइजेशन होथिबो रिजेनेरेशन पई कोन होथिबो ना एटीपी रो यूटिलाइजेशन हेकिना एडीपी प्लस किछि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनुथिबो तो ए समय गोटे एटीपी बनुथिबो गोटे पई ए सब पई गोटे एटीपी दरकार होथिबो अच्छा तो एठी कोन हबो ना राइबुलोज 1 फॉस्फेट तो बन गला देखो 6टा कार्बन 5टा कार्बन वाला बन गला बट आ गोटे कार्बन कोन हो जाउथिबो ना बाहर जाउथिबो केल्विन साइकिल रु एंड सेही कार्बनटा जाय किना फर्दर कोन होथिबो ना आपनकर ग्लूकोज वगैरह माने ए जो फ्रुक्टोज पाखु चली जाउथिबो तो एभला ग्लूकोज वगैरह बनिया पई हेल्प करथिबो एंड सेथि पई गोटे कार्बन डाइऑक्साइड एठी यूज हेले आ गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मात्र एटू रिलीज होथिबो हला गोटे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन फेज रे सिलेक्शन माने यूटिलाइजेशन होथिबो देन रिडक्शन हेकिना तार फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनुथिबो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड रु ए सब एमती प्रोडक्ट बनि किना फाइनली आसुथिबो एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट रु रिजेनेरेशन हैला बळे बनि जाउथिबो कोन पुणी ना आरयूबीपी बनि जाउथिबो बट कार्बन गोटे केल्विन साइकिल बाहर पळे आसथिबो फॉर फिक्सेशन एंड एभली 6टा जदि कार्बन डाइऑक्साइड आसीबो अल्टीमेटली हम 6टा कार्बन पाइकिना सेतिर गोटे 6टा कार्बन वाला फर्स्ट फ्रुक्टोज पाइबा देन सेटा कन्वर्ट हेकिना आसीबो लास्ट को ग्लूकोज और सुक्रोज और से सुक्रोज फर्दर जाइकिना और से ग्लूकोज की फ्रुक्टोज पुण फर्दर जाइकिना स्टार्च बा स्टोरेज फॉर्म को कन्वर्ट हो जाउथिबे एवडा थिला ओवरऑल प्रोसेस एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ना यू हैव टू रिमेंबर दैट regeneration of RUBP is not a part of Kelvin cycle. Examination point question मध्ये आसी पारे the regeneration of Kelvin RUBP is not a part of Kelvin cycle. It is most important. देखंतु ए सब को हम अलगा कहली ना
ରିଜେନେରେସନ୍ बेले आसे क्वेश्चन आप तीन स्टेप अच्छी किंतु ये कौन गला नाई रीजेनरेशन ऑफ REBP it is a random process it can occur from you can see here डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट रू बनी पार प्लस फ्रुक्टोज भी बाहर जो से बनी पारे से REBP सो रीजेनरेशन ऑफ REBP इज नॉट ए पार्ट ऑफ C3 साइकिल किंतु आपण प्लस टू भाई एगुड़ा सब देइछि CBSE बुक रे एगुड़ा सब देइछि जदि एटा माने नॉट ए कंपलसरी पार्ट कहीं ना फ्रुक्टोज बाहर जो स्टोरेज फॉर्म जाऊँगी से बनी पार आपंकर राइबोलोज मोनोफॉस्फेट वगैरह बनी पार REBP मोनोफॉस्फेट देन पुणी फॉस्फेट आड होना REBP बनी पार राइबोलोज मोनोफॉस्फेट देन एठू पुणी आ गोटे ATP रो कंज्यूमशन हम ATP रो कंज्यूमशन है फाइनली अल्टीमेटली ये कौन की जो ये ATP रा कंज्यूमशन मुझे देखा ATP रो कंज्यूमशन है ये REBP को कन्वर्ट होगा है कि राइबोलोज 1,5 bis phosphate and it is a 5 carbon compound and it is not the compulsory step of what your regeneration sorry compulsory step of your C3 cycle and ये associated reaction होता है कुछ रे ना हमर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रे and जदि आमे देखिबा ATP और NADPH रो यूज कथा ताले what is happening ना here इठी कौन हुए ना टोटल 12 ATP molecule is requiring as well as 12 NADPH molecule is requiring during the reduction step है कि कौन पाई ना during reduction and से reduction समय कौन हुए ना फाइनली 6टा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आसिकिना कौन बने ना रिडक्शन समय फाइनली आपनकर बने रिडक्शन जोगु फाइनली आपनकर बने कौन ना गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 बने फ्रॉम वेयर ना फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ठीक अच्छी आउ ये 6टा गोटे मॉलिक्यूल बने कौनटा ना 6टा कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन होला परे बा 12 ATP और NADPH बनला परे गोटे मॉलिक्यूल बने ग्लूकोज प्लस आ कोनटा बने ना 6टा मॉलिक्यूल बने आपनकर REBP रीजेनरेशन पाइका एंड एक्चुअली जदि आपण रीजेनरेशन स्टेप को देखिबे दिस इज द फर्स्ट रिडक्शन स्टेप एंड जदि रीजेनरेशन स्टेप रे देखिबे सेठी कोन हो जिवो ना 6टा ATP दरकार होबा 6 ATP इज रिक्वायर्ड for what na for regeneration of REBP जोटा कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है कि एंड केतरा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हम ना 6 एंड दे आर 5 कार्बन कंपाउंड दे आर व्हाट 5 कार्बन वाला कंपाउंड जदि आम ओवरऑल प्रोसेस देखिबा टोटल केते ATP यूज होला सो टोटल और नेट इज 18 ATP and 12 NADPH is used they both are used and 12 ATP for reduction and 6 ATP during regeneration so ultimately 18 ATP क्वेश्चन को बुझिबार अछि जे क्वेश्चन जदि पचार थिबो जे ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हाउ मेनी ATP इज रिक्वायर्ड टोटली यू विल से 18 ATP then if the question is asking during the reduction phase of Kelvin cycle or C3 cycle how many ATP is requiring except regeneration then you will say it is 12 ATP and if the question is asking during regeneration how much ATP is used you can say it is 6 ATP अच्छा next what are the significance of C3 cycle that C3 cycle होची तार significance कोना ना it is the main biochemical pathway during the dark reaction of photosynthesis it results in the synthesis of carbohydrate from carbon dioxide जोटा कि हमें कहूचे fixation of carbon dioxide or assimilation of carbon dioxide मध्ये कहि परिबा it depend upon light reaction for the supply of the assimilatory power
which are ATP and NADPH2 required for carbon fixation or your assimilation, and it stores the ATP energy formed during the light reaction in the carbohydrate molecule as food energy. As you see that these things are 6 ATP as well as 12 ATP, totally 18 ATPs are utilizing, and ultimately you can see here these 12 ATP are utilizing to make one molecule of carbohydrate, and that carbohydrate will become very energetic due to the consumption of more ATP energy, and it is the primary source of organic food as well as the food energy for all the organisms. And Kelvin cycle, or you can say it as a C3 cycle. This reaction occurs in all photosynthetic plants like C3 cycle, C4 cycle as well as CAM plant during the dark phase of the photosynthesis. So it is not strict to only C3 plant. So it is common in all plants. कहीं से तबले एग्जांपल मु लिखि पारनथली एबे आपण बुझंतु. It is common in all plants means C3, C4 as well as CAM plants. किंतु आकु कहीं को होउची C3 cycle and or Kelvin cycle because the first product is your 3 carbon compound. Next we will see about the C4 pathway, and C4 pathway is known as Hath-Slack pathway, and ए विषय डिटेल्स पढ़ा बोध आज टाइम हेनी क्या ऑलरेडी आपण मैंने शुणी पार्थे जदि बैकग्राउंड रे बेल हो गलानी हमर. अच्छा तो देखिबा C4 पाथवे कौन जितिक जाए जीव जीव. आई विल टेक अनदर फ्यू 10 मिनट. C4 cycle or it is known as Hath-Slack pathway, and this is otherwise known as dicarboxylation pathway. It is otherwise known as dicarboxylation pathway. आपण मन को एमिति बुझेबा बेका बेटर हबो कि गोटे कंपैरिजन नै किना बुझे देबा नै छडा देखंत. तो आकु कहीं कि C4 साइकिल को होछ ना आरो फर्स्ट इंटरमीडिएट बा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के थिला ना. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज ए 4 carbon compound, and that 4 carbon compound was oxaloacetic acid, or you can say OAA. What is it? OA stands for oxaloacetic acid. है कि जेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड है पर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है पर फर्स्ट स्टेबल 4 कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट बनता से ना दिया है C4 पाथवे. अच्छा एंड आपको फर्स्ट रिपोर्ट किए करथिले? फर्स्ट reported by Kortchak. Most important name. First reported by Kortchak. When? 1964. Where? Na in sugarcane leaf. Okay. Then ये सब जो डिटेल्स किए स्टडी करथिले कि आमर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ठू नहीं कि ना सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जोटा कि एंड प्रोडक्ट इंटरमीडिएट सिना गोटे C4 कार्बन वाला आसथिला, बट ए ओवरऑल स्टेप को जे स्टडी करथिले वेरियस स्टेप को जे स्टडी करथिले से थिले दुटा साइंटिस्ट जे कि जन थिले हैच आ जन थिले स्लैक, एंड सेति पई ए पाथवे ना हला कोन ना हैच-स्लैक पाथवे. ए माने कोन करथिले ना they found out the details study करथिले और कंप्लीट स्टडी करथिले. बट C4 प्लांट प्रोडक्ट फास्ट बनछु बोली रिपोर्ट करथिले Kortchak. आ ओवरऑल प्रोसेस के करथिले कंप्लीट स्टडी के करथिले Hath-Slack. लकी एंड जो प्लांट आको फॉलो करे से प्लांट को हम कोन कहबा C4 प्लांट. मन रखंतु से प्लांट को हम कहबा द प्लांट्स आर C4 plants, and examples are very important for exam point of view. कौन ना फास्ट एग्जांपल आम नवा कौन जो फास्ट डिस्कवर कराइथिला C4 प्रोडक्ट गोटे है सुगर केन, ता सहित आ कौन ना मेज, जवार आउ
many grasses. In some monocots as well as in some dicots, very few. Okay, you can see the C4 plants. And C4 plant रे गोटे स्पेशल स्ट्रक्चर देखा जाए बा एनाटॉमी देखा जाए. जदि आपण लीफ को देखिबे कौन ना लीफ रे जदि आपण ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ नेबे, then what you will see? You will see a special anatomy, and that anatomy is known as Kranz anatomy. And this Kranz anatomy was proposed by scientist Kranz according to his name. And एथिरे कौन थाए ना मेसोफिल सेल कंपैक्ट होइकिना थाए और डिस्टिंक्ट बंडल सीथ अराउंड द भास्कुलर बंडल थिबो. एंड बंडल सेल्स आर लार्जर. आपण माने जदि देखिबे आपण माने मु देखे दोछि डायग्राम डायरेक्ट क्रांज एनाटॉमी आपण बुझि परिबे. हैला कि क्रांज एनाटॉमी जदि आपण देखिबे टिके वेट करंतु. डायग्राम अटैच करि पारनी. अच्छा हाँ, ये आपन एठी देखाई दउची जे इनिशियली जो आपण देखथिले C3 फोटोसिंथेसिस पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली स्टोमाटा देकिना एंट्री करथिला. एंट्री कला परे एठी कोन होथिला ना केल्विन साइकिल को एंट्री करथिला आरयूबीपी. एंड सेठी मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम थिला रुबिस्को. एई कथाटा भूल जाइथिली. एंजाइमेटिकल प्रोसेस ना तो रुबिस्को कथाटा भूल जाइथिली. मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम थिला रुबिस्को. ए पॉइंट आपण मध्ये ऐड कर दियंतु. C3 प्लांट रो मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम व्हाट इज दैट ना C3 plant ro most important enzyme here, this one is most important enzyme is as well as it is most abundant enzyme. abundant माने बहुत प्रचुर देखा जाए. abundant enzyme के थिला ना abundant enzyme थिला आपनकर रुबिस्को. means ribulose bisphosphate or biphosphate carboxylase and oxygenase. C for carboxylase and O for oxygenase. ये ना कहीं दिया राइबुलोज बिसफॉस्फेट. यू नो दैट राइबुलोज बाइफॉस्फेट. तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज आना इथिपाई दिया जे ये दीटा रिएक्शन को करि परथुवा. गोटेला कार्बोक्सिलेशन करि परथुवा ड्यू टू इस कार्बोक्सिलेज नेचर एंड ऑक्सीजनेशन प्रोसेस करि परथुवा ड्यू टू इस ऑक्सीजनेज नेचर. एंड ऑक्सीजनेज कले फोटो रेस्पिरेशन हुए बट कार्बोक्सिलेशन कले आपनकर C3 साइकिल बा कार्बन डाइऑक्साइड रो फिक्सेशन हुए. एंड ऑक्सीजनेशन जोटा कि फोटो रेस्पिरेशन गोटा कि वेस्टफुल प्रोसेस. फोटो रेस्पिरेशन गोटे वेस्ट प्रोसेस कहीं सेठी यूटीपी रो यूटिलाइजेशन हो जाए थाए. कार्बन डाइऑक्साइड रो लॉस होता है. एंड ए विषय में डिटेल्स लास्ट पढ़ा. फोटो रेस्पिरेशन को मध्य C2 साइकिल कहते है कि छाड़ू. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपण मन रखा पड़े द एंजाइम एंड इट इज मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड. दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ आवर बायोस्फीयर. अच्छा से क्रांज एनाटॉमी विषय में देखा नेक्स्ट क्लास रे जदि पॉसिबल है क्रांज एनाटॉमी रो गोटे डिटेल्स फोटो आनिकना क्रांज एनाटॉमी बुझेबी. एंड क्रांज एनाटॉमी बुझला परे आपण माने देखिबे जे C4 पाथवे केमते कोन होउची कोन नै हैला. ओके आज तो समय जाइछि बस आज पय एतिकी. टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे. इफ पॉसिबल then you can support me by performing by showing your like, share as well as comment. Thank you. Have a nice day. Keep learning and stay blessed.